Assalamu alaikum. Ahmed here again. I said we will be doing like the first four questions of the light at the night and the rest of them in the next video lecture sometimes. So for the next question answers, uh, if you look at E, the answer says in London today there are roughly 1500 gas lamps. Five people are employed to light these lamps today. Yes, because there is not much need to light these lamps today. So only five people are employed to light these lamps. For question G, it says some of the unpleasant aspects of the early oil lamps were that the oil of them in them had an unpleasant odor, and they had to be carefully cleaned and maintained so that the gas did not get glass did not get dirty. तो जो ऑयल लैंप लगाए गए शुरू शुरू में उनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जब उनको रोशन किया जाता तो तेल के जलने से एक बहुत बुरी स्मेल पैदा होती, और जब तेल जलता तो जो शीशा लगा होता इन गैस लैंप्स पे वो गंदा हो जाता और उसको साफ़ करना पड़ता. द डेंजरस थिंग अबाउट द गैस लैंप्स दैट दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1800 वाज दैट एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम वुड ब्लो अप, क्योंकि गैस हाईली कंप्रेस्ड होती है और हीट मिलने पर एक्साइटेड होके अपने कंटेनर से निकलना चाहती है. तो इसलिए जो गैस लैंप्स इंट्रोड्यूस करवाए गए वो कभी कभार फट जाते. और लास्ट क्वेश्चन सेज दैट द मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी. जो आजकल मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए हैं उनको पावर देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है, जो कि हाईली एफिशिएंट और मोस्ट मॉडर्न वे ऑफ illumination है. So write this question answers to this question on your neat notebook, and until next video lecture, Allah Hafiz.